संतान सिंह घर आकर बुलाकर ले गया था, यह बात मुझे मेरा देवर राम खिलावन ने बताई। इसमें तो कह रही कि आपके यहाँ खाना खाने गई थी, गया था। नहीं, वाइफ कह रही है, लेकिन वाइफ क्या कह रही है कि वो देवर ने बताया था, ऐसा ऐसा बोल दो कोर्ट में। कोर्ट स्टेटमेंट में ये बोलती में संतू सिंह का नाम है, संतू ठाकुर का नाम है। यू आर नॉट संतू ठाकुर। हाँ, डिफेंस का केस यही है कि देयर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। सजेशन भी दिया है और उसको इस बात को जो है PW2 जो कि राम खिलावन ने जिसने की रिपोर्ट लिखाई वो कहता है, वो भी इस बात को कबूल करता है। तो ये कुछ सजेशन दिया है कि ये किस संतू की बात की जा रही है, कुछ पूछा है उससे? हाँ, ये पूछा है। बट हिज टॉर्च एंड मोबाइल इज रिकवर्ड फ्रॉम यू। टॉर्च एंड मोबाइल हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम मी, बट दैट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ ओमिशन। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला है कि हाँ, उसकी वाइफ ने मुझे नहीं बताया कि मेरा हस्बैंड जो है और वो लेके गया था। दूसरा जो इसका विटनेस है वो कहता है कि टॉर्च और मोटरसाइकिल टॉर्च और साइकिल सबके यहाँ रहती है गांव में। दिस द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, योर ऑनर। द appellant is inside jail since 1/3/2015 and conviction is under section 302(201). The case of the prosecution in brief is this, your lordship, that this deceased left his house on 24/2/2015 and it is alleged that paragraph 2, yes, your honor. अभियोजन मामला संक्षेप इस प्रकार है कि राजकुमार यादव मृतक घटना दिनांक 24/2/2015 को शाम करीब 6 बजे अपनी पत्नी धनियाबाई से यह कहकर घर से निकला कि वह संतान सिंह और संतू ठाकुर आरोपी के घर सहजनी खाना खाने जा रहा है और वहीं से खेत चला जाएगा, किंतु वह नहीं लौटा। उक्त संबंध में उसकी पत्नी धनियाबाई द्वारा आरक्षी केंद्र बंटवारा पर संबंध में दी गई सूचना पर से गुम इंसान 4/15 दर्ज की जाकर मामला अग्रिम जांच में लिया गया। तदोपरांत दिनांक 28/2/2015 को गुम इंसान राजकुमार यादव की लाश ग्राम सुनहरा के जंगल में पड़ी मिली। तत्समय में लाश का दस्तयाबी पंचनामा प्रदर्श P11 तैयार किया और मृतक के भाई राम खिलावन यादव द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि उसका भाई राम कुमार यादव दिनांक 24/2/2015 को 6 बजे अपनी पत्नी से यह कहकर निकला था कि संतान सिंह के घर सहजनी खाना खाने जा रहा है, जो वापस नहीं आया। तब उसकी काफी तलाश की किंतु कोई पता नहीं चला। उसने अपनी भाभी धन्यवाई के साथ जाकर 26/2/2015 को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बड़वारा पर लिखवाई, जिससे आसपास के जंगलों में दिनांक 28/2/2015 को गांव के व्यक्तियों पुलिस के साथ तलाशी करने पर उसके भाई राम कुमार यादव पुत्र माधव यादव की लाश सुनहरा के जंगल में पड़ी मिली। लाश सड़ गई थी और कई कीड़े पड़े थे। उनका भाई वही कपड़े पहने था जो घर से There is no eyewitness. There is no eyewitness. What are the circumstances? PW1, 2 and 3 are important, your honor. One is Dhaniyabai. She specifically says in her cross. PW1. Widow. Dhaniyabai. ये बहुत पैराग्राफ 6 की लास्ट लाइन, देवर ने बताया आज न्यायालय में जाकर बयान देना है। मुझे देवर ने बताया था, मैं वहां ढूंढती रही। यह भी कह देना कि वह मेरे घर नहीं आया और संतान सिंह ने बुलाकर ले गया है। मैंने ऊपर जो बयान दिया वह देवर के कहने पर दिया। उसके बाद पैराग्राफ 7 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है, ये अब इंप्रूव करती है। स्वतः कहा कि संतान सिंह घर आकर बुलाकर ले गया था, यह बात मुझे मेरा देवर राम खिलावन ने बताई। PW, if exhibit P12 is seen, your honor, which is the missing person report, this says an altogether different story. Exhibit P12. दिनांक 24/2/15 के शाम 6 बजे इसका पति से संतू ठाकुर की यहाँ खाना खाने कहकर गया था, वहीं से खेत चला जाऊंगा। एग्जिबिट जस्ट अ मिनट, एग्जिबिट P12। ये किसने लॉन्च किया है? वाइफ ने। ये वाइफ ने लॉन्च की, लेकिन वाइफ से इसको एग्जिबिट नहीं कराया, क्योंकि वाइफ क्या कहती है
इसमें तो कह रही कि आपके यहाँ खाना खाने गया था। नहीं, वाइफ कह रही है, लेकिन वाइफ क्या कह रही है कि वो देवर ने बताया था, ऐसा ऐसा बोल दो कोर्ट में। कोर्ट स्टेटमेंट में ये बोलती। और इसमें संतू सिंह का नाम है, इसमें एग्जिबिट P12 में संतू सिंह का नाम है। संतू ठाकुर का नाम है। यू आर नॉट संतू ठाकुर। हाँ, डिफेंस का केस यही है कि देयर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। सजेशन भी दिया है, और उसको इस बात को जो है PW2 जो कि राम खिलावन ने जिसने की रिपोर्ट लिखाई वो कहता है, वो भी इस बात को कबूल करता है। वो उसने अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ की, ये कहता है, ये PW2 के रूप में एग्जामिन हुआ है योर ऑनर। राम आई एम सॉरी माय लॉर्ड्स, PW3 है, राम खिलावन इज PW3। देवर है ये देवर है। ये पैराग्राफ 13 की लास्ट लाइन में, मैं संतू ठाकुर व संतान सिंह दोनों को जानता हूं। पर ये कुछ सजेशन दिया है कि ये किस संतू की बात की जा रही है, कुछ पूछा है उससे? हाँ, ये पूछा है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पैराग्राफ 37 में बड़ा स्पेसिफिक सजेशन दिया है। यह कहना गलत है कि आरोपी ने गिरफ्तार होने की, ये है PW12 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके पैराग्राफ 37 में यह कहना गलत है कि आरोपी ने गिरफ्तार। एक मिनट जी, यू आर नॉट गेटिंग दिस। and there is another story too in the prosecution case also. We are not getting the statement of PW3. PW3 the last line of his cross. These are, in fact, the code below has not chronologically and systematically. Yes. Then I will arrange, your honor. It may be taken. Then it is there. Now you may read. Paragraph 13 of PW3. Yes. लास्ट लाइन, मैं संतू ठाकुर व संतान सिंह दोनों को जानता हूं। एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PW12 इन पैराग्राफ 37 हैज बीन स्पेसिफिकली गिवन दिस सजेशन। यह कहना गलत है कि आरोपी ने गिरफ्तार होने के पूर्व मुझे बताया था कि संतू ठाकुर ग्राम बड़केरा में रहता है, वहां के पंडा का लड़का है। And what is the other material? Any incriminating material? There is an extrajudicial confession they say which has been made to PW2. What is your stand about that? PW2, my lord, there was no reason for the present appellant to make a extrajudicial confession to PW2 because it is an admitted fact that the wife of the appellant election against this particular lady, this particular lady, and so they were not at speaking terms. So why would he make an extrajudicial confession to this lady? That is one thing. Another thing is that they specifically say that extrajudicial confession was made to this lady before the recovery of the dead body. Before the recovery of the dead body, and she says that she has informed the police. But the second document which was written by the prosecution, the investigating agency, does not mention this fact. This document is on record in the form of exhibit P34. P34 is the police party which left for searching of the dead body, in search of the dead body or this person, but exhibit P34 nowhere mentions that this lady has anywhere informed this the investigating officer or the police of concerned police station. और इसीलिए उसके एविडेंस में भी इस बात की वो आई है कि when she informed. But his torch and mobile is recovered from you. The torch and mobile has been recovered from me, but that has come in the form of omission. वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला है कि हम उसकी वाइफ ने मुझे नहीं बताया कि मेरा हस्बैंड जो है
और वो लेके गया था। दूसरा जो इसका विटनेस है वो कहता है कि टॉर्च और मोटरसाइकिल सबके, टॉर्च और साइकिल सबके यहाँ रहती है गांव में। सो स्पेसिफिकली इट वाज ऑफ द डिसीज दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। It was not identified. वो नहीं, उसकी वाइफ ने बोला, वाइफ का एग्जामिनेशन किया है तब बोला स्पेसिफिकली ये आपने मोबाइल कभी चलाया था? मैंने वो मोबाइल कभी नहीं चलाया था। But whether it is SIM was in his name or not, nothing. नहीं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसका कॉल डिटेल या कुछ भी नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं निकाला। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा भी है कि भाई इसका कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाला आपने। And this nylon rope and These are all common। उसको रिलेट भी नहीं किया, ये जो पुलिस वाला जो no FSL report about no, that. इसकी कोई एफएसएल रिपोर्ट नहीं, उसको रिलेट भी नहीं किया कि इससे गले से वो किया हो। PW9 डॉक्टर इज PW9, he has not related this। Any motive proved? मोटिव में वो ये कहता है जब उसके मेमोरेंडम उसे पूछताछ की तो वो ये बताता है कि ये मेरी वाइफ के ऊपर बुरी नजर रखता था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। And you were in custody since? 1/3/2015 से। Yes, come. Last seen malord the PW7 and PW3 also stated malord, and cause of death malord is strangulation malord. PW11 malord, in the para malord Dr. Anil Jhamnani PW9 malord. पोस्टमार्टम में उसने पाया शरीर को सड़गल गया है, कड़ापन, दोनों हाथ पैर जंगली जानवरों द्वारा खा लिए गए मालूम। इसके नीचे मालूम एक गमछा काले कलंग गले के चारों तरफ था, जैसे कि सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंपा। मालूम गमछा भी सीज हुआ है। वन मालूम इसमें मालूम इसमें एक भारत निर्वाचन आयोग का जारी प्रमाण पत्र, वो ID कार्ड है मालूम, वो भी सीज हुआ है हमारे। कोर्ट ने उसको सर्कमस्टांस में नहीं माना है। पैरा 19 देखिए, पैरा 19 ऑफ द जजमेंट, जो है आपने, यू आर राइट, पैरा 4 में कहा है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है मिस्टर वागरेचा जी? आईडी का भी क्रॉस हुआ है, उसमें बहुत स्पष्ट बोला है कि भाई जब अपनी लाश वहां पर फोटोग्राफ लिए लाश के, why this ID is not there in the photograph? So he has no explanation, and then we have given this ID is recovered from you, not no. As per prosecution story, it is my own ID. It is your my ID is recovered near the dead body, near the dead body. So we asked this investigating officer that when you were photographing the scene of crime, then why this ID is not there in this particular. So he had no explanation. Then we gave him this suggestion that, look, this gentleman, when you arrested him, he showed his ID and he told you that he is not Santu Thakur. So you took this ID and made a wrongful seizure of this. And that is why जब इसका सीजर किया तो उस पर कोई गवाहों की निशान आपने दस्तखत नहीं ली है. This was a specific suggestion given to investigating officer. Seizure is also not true. No, as per my submission, that is not proved, Your Honor. क्योंकि वो उस पे लिखते ना, उस दस्तखत लेते उसी वक्त गवाहों के कि ये यहाँ पर था. Issue Alok Wagrecha for the appellant such and such, IA number such and such is taken up for suspension of sentence arising out of such and such. Not learned counsel for the appellant submits that this appellant is in custody since 1/3/15. But there is no eyewitness to the incident. The conviction of appellant is based on circumstantial evidence. No motive could be proved. Next, me criticizing the prosecution story, it is submitted that as per the story, the widow Dhania Bai PW1 stated that the deceased before leaving the house informed
her that he is going to take lunch दिन का है ये खाना खाने के लिए हाँ, going to शाम का खाना है. going to take dinner at appellant's place, and thereafter he did not return. That through exhibit P12, a Gum Insan report was lodged by the widow. But however, she did not exhibited this document in the court. But this document talks about a different person, namely inverted commas Santu Thakur. Santu Thakur है ना ये? Santu Thakur. There are two persons of same name in the village, which is duly admitted by Ram Khilawan. राम खिलावन ने ये नहीं बोला, राम के दोनों को जानता हूं मैं, उसने ये बोला. हाँ, इस नाम के दो लोग हैं, ये मानते, is accepted by PW3 Ram Khilawan bracket में brother of deceased. Shri Bagrecha placed reliance on the statement of widow PW1, wherein she has stated during cross-examination that his statement made in examination in chief is as per the directions / instructions given by her brother-in-law Ram Khilawan PW3. Thus, statement of this widow is not worthy of credence. But it is further submitted that circumstances mentioned by the court below in para 19 are not do not match with inverted commas Panchsheel principles laid down by Supreme Court. There was no reason as to why extrajudicial confession would be made to the PW1 with PW2, with whom there was an election rivalry, and they were not even in talking terms. But apart from this, there is no evidence whatsoever to show that the torch and Samsung mobile were property of the deceased. The police has not taken, prosecution has not taken any photograph which demonstrates that the identity card of the appellant was found near the dead body of the deceased. Thus, prosecution story is not trustworthy, considering the period of custody and the fact that final hearing of this appeal of 2019 is not possible in near future, the remaining jail sentence may be suspended. The prayer is opposed by learned government counsel on the basis of the objection. We have heard the parties at length. Considering the aforesaid factual backdrop, period of custody, and the fact that final hearing of this appeal is not possible in near future, we deem it proper to suspend the remaining jail sentence. इनको 30,000 रुपए की जमानत दे दीजिए. ट्रायल कोर्ट कटनी के सामने 22 दिसंबर and further dates.